charged particle moves in a circular path, and velocity at any point, the tangent will give you the linear velocity, the direction of the linear velocity. And suppose it is into the pen of the paper, that means that is also one axis, and velocity is mutually perpendicular another axis, and force is also mutually perpendicular another axis. Okay, so the centripetal force, that is mv square by r, is equal to the force of magnetic due to magnetism. Okay, so q vb, kind of q v cross b, mane vb sin 90 is eta, so q vb is equal to mv square by r. So we got this value, what is the radius of the circular path, and we have also calculated the angular velocity, that is that also doesn't depend upon this v and r, rather they depend upon the charge of the particle, the magnetic field and mass of the particle. Similarly, the time period, that is time period, or you can say t is equal to 1 by mu, that is frequency or mu bar jeta kohti. Okay, so seita 2 pi r by v, so seita ko ame jetale bahar kale 2 pi m divided by qv, so that is it kon ame paile, that is independent of the particle speed, independent of velocity, and independent of also radius. Okay, so it depends upon the magnetic field. The magnetic field magnitude, it depends upon the mass of the charged particle and charge of the charged particle. Okay, and this is the formula for the kinetic energy of the charged particle moving in a circular path in when placed in an uniform magnetic field. So actually, they don't satisfy this in real conditions. Actually, they don't ideally move in a circular path, but that is in a helical path. Why it is helical path? Suppose there is a charged particle here. Okay, so it has some three-dimensional coordinates. Suppose it would good particle कोठी भी गोटे रखिले in the space. Okay, so it has some three-dimensional coordinate x, y, x रे तारा projection केते जाइछि, y axis में कितना गया है और z axis में कितना गया है. So projections. Okay, so three-dimensional coordinate गोटे particle का space रे रहिबो. Suppose the magnetic field is in positive x direction. Okay, ये जो ठीक टाइम रे आसीबनी गोटे 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 जो जॉइन होचंती एबे माने मोर स्क्रीन ऊपर बारंबार बारंबार आसुची के जणे जणे जॉइन आसुचंदी छाड़ा. So whenever the magnetic field, suppose it is in positive x direction and there is a positively charged particle in space, and okay, so according to the this formula for magnetic force or whatever, that is q into v cross b. Okay, so every velocity, that means suppose this charged particle is moving in this direction, so let us consider, so it has some three-dimensional coordinate, and definitely it would have some projection in x and y axis. Okay, so say जो जिनछटा को मुझे भी कहली cyclotron frequency जो माने move करे, and helical path काहे की, if a charged particle moves in a uniform magnetic field with its velocity at some arbitrary angle with respect to ये क्या magnetic field perpendicular to the magnetic field, so it must be a circular path. But if it is at some other angle with respect to the magnetic field, the path is a helical path or helix ताकू कहा जाए हैला. So this is the representation of the helical path. काहे कि whenever a charged particle having a velocity vector that has a component parallel to the uniform magnetic field, okay, जेतेबेले q v cross b माने v suppose it is at an angle with respect to b, suppose theta. Okay, so v रो गोटे x component आसीबो, गोटे y component आसीबो. Okay, so suppose this, when this x component of the velocity is parallel to the direction of the magnetic field, let us consider when the x component of the velocity of the charged particle is parallel to the direction of the magnetic field, so definitely उसके जगह क्या उस केस में क्या हो जाएगा, force will be equal to f q into v cross b, that is q v b sin कोन हे जिवो 0 डिग्री हे जिवो, माने v x पई हमें एठी पकेबा q v x into b into sin 0.
that is equal to what? 0. Okay. So when force is equal to 0, when in the x direction the force is equal to 0, माने velocity रो जो x component जो पटे सेही direction रे force टा जदि 0 ता माने कोन आमे कहि परिबे? That means what? The charge particle is moving at a uniform or by constant velocity. काहे की force टा 0 माने mass into acceleration होची 0, but mass तो गोटे charge particle रो अछि already. Okay, it is not 0 mass, so definitely acceleration is equal to 0 हैला. सेही डायरेक्शन रे जदि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 ता माने हम कोन जानछि कांस्टेंट वेलोसिटी रे जते बेले गोटे पार्टिकल मूव करे हैला सेते बेले एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0. दैट मींस एई डायरेक्शन रे माने पार्टिकल रो जो मूवमेंट इट इज इन ए कांस्टेंट वेलोसिटी, बट इन y डायरेक्शन एवं z डायरेक्शन एठी कोन हे जिवो? But however, the magnetic force causes the components Vy and Vz to change over time. With respect to time, से माने कौन होबे? Magnetic force बढ़िबो किबा माने orientation change ले कमिबो, तो सेति पई कौन हुए? Particle is moving in this direction, but it is moving like this. Okay, so this forms a helical path. Okay, so that is the basic idea of the cyclotron, is to, in order to enhance the speed of the particle. Actually next माने example ले देखेबी magnetic field speed तो enhance करि परिबनी, but whenever we place a cyclotron or a charge particle to माने we adjust our electric field and magnetic field in such a way that the charge particle moves in a very high speed of even to the order of the speed of the light. Okay, so whenever the charge particle moves in such kind of speed, okay, so what is happening, so एमती हेलिकल पाथ रे मूव करी करी गोटे जगह रे पॉइंट आसीबो, से गोटे देखिबो सेटा साइक्लोट्रॉन रो एग्जांपल माने कोन पई से माने जो न्यूक्लियस को बॉम्बार्डमेंट करिवे गोटे हाईली स्पीड इलेक्ट्रॉन, हमर जो लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर अछि सेटा को कह जाय साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन हैला, साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन, एम सब विभिन्न प्रकार रो चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन को हमें ये कर परिबा, न्यूट्रॉन को मध्य सेति स्पीड रे घुमे परिबा हैला. तो एमती जाय कि से माने गोटे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस को बॉम्बार्डमेंट करंती, सो दैट सेठू कोन हुए एनर्जी जनरेशन हुए कि जहा भी सब ई सब स्टडी करा जाय. इवन एक्सरे ये सब जो तमरो कोन जो सीटी स्कैन मशीन ये सब रे साइक्लोट्रॉन रो कांसेप्ट आसे. So this is the माने helical path रो कांसेप्ट होची ए डायरेक्शन रे मूव करूची, बट इट इज मूविंग इन ए हेलिकल माने सर्कुलर हेकरी आस्ते आस्ते आगो बढ़ बढ़ चलियो. ओके, so there is a problem for you all. So when the electric field is suppose electric field E रो value होची 1.5 kilovolt per meter and a perpendicular magnetic field रो value होची 0.4 tesla, act on a moving electron to produce no net force. So force is equal to 0. So what is the electron speed बोली हमको मांगी केमति करिया? आमे जानचे कोन फोर्स इज इक्वल टू एठी जो कहिथिल तम मानगु लॉरेंज फोर्स, ए एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग चार्ज पार्टिकल्स मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड. कोन कहिथिल जेमति साइक्लोट्रॉन कथा कहउथिले सेमति विभिन्न प्रकार एप्लीकेशंस अछि, जेमति कि एठी गोटे सपोज मैग्नेटिक फील्ड अछि क्रॉस माने सेटा इनटू द पेन ऑफ द पेपर तार डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड र डायरेक्शन को पटे पॉजिटिव टू नेगेटिव जो प्लेट अछि, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट पटे एमती इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन, एवं एटा कोन जाईची भितर को जाउची माने हम पेपर रो भितर को जाउची, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन. सो डेफिनेटली एमती गोटे कंडीशन आसीबो जोटी कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स माने QE इज इक्वल टू Q V क्रॉस B. सेही केस रे कोन हुए, द पार्टिकल मूव्स इन राइट साइड डायरेक्शन, ए जो ए पट डायरेक्शन रे से मूव करिवो. ओके, सो लॉरेंज फोर्स ताको कहआ जाय व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल मूव्स विथ a velocity v in the presence of both electric field and magnetic field,
they experiences force, the particle experience force or electric force or magnetic force is exerted on the particle, and the total force is called as Lorentz force that is acting on charge, that is equal to QE. এটা কোন electrostatic force, QV cross V কোন magnetic force. For Q is positive, মানে যদি charge particle টা positive charge particle, then the magnetic force is upward and the electric force is downward, जोटा एठी देखैछि ए फिगर रे. And when the magnitudes of the two fields are chosen so that Q is equal to V, মানে এটা কোন হবে straight line रे तापरे move करिवा पे. And from the expression we can get এই জায়গায় যদি আমি এটি Q Q কাটি দেবা, okay, so QE এটা হবে capital E, sorry, so QE is equal to QV cross V. QE capital E, that is electric field, is equal to QVB. କାହିଁକି V ଆଉ B ଭିତରେ sin 90 ତ 0 ମାନେ 1 ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି QVB ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଛି. So ଏଠି ଯଦି ଆମେ QQ କାଟିଦେବା, so what relation will get, that is velocity is equal to electric field divided by magnetic field. Whenever the electric field and magnetic field are in mutually perpendicular directions, সেই কেসরে ଆମେ କହିପାରିବା କିମ୍ବା velocity and this magnetic field are in mutually perpendicular directions. So in case रे हमको कौन कहिछि, the electric field of this much and a perpendicular magnetic field of this much Tesla acts on a moving electron. So Q is equal to what, E एठी हमें नबा माने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, किंतु एठी हमें मॉड्यूलस टा नबा. जनरली हमें स्पीड बाहर करछे, सो देयर इज नथिंग कॉल्ड माने एठी हमर किछि कांसेप्ट नाही नेगेटिव देखैबार, तो सेति में हम जस्ट इलेक्ट्रॉन रो मैग्नीट्यूड पचारछि, तो सेति में एठी हम पॉजिटिव नै परिबा. सो एठी हमें कोन करिबा, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, नो नेट फोर्स. गोटे एमिति प्रकार रे एडजस्ट हेछि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सो दैट नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. सो फोर्स इज जीरो. सो फोर्स इज जीरो माने Q E plus V cross B is equal to 0. Okay, so in this case you can write, so VB is equal to E, or you can write V is equal to whenever there is no angle given, just put 90 degree simply. So V mean माने is equal to E by B हमें जानिले पूर्व रिलेशन रो. So that is equal to 1.5 into it कौन kilovolt अच्छी, so we have to convert to volt, 10 to the power 3 divided by Tesla is 0.4 Tesla. So for this case you will get 3.75 into 10 to the power 3 meter per second. Hello, 3.75 into 10 to the power 3 meter per second, माने 15 by 4 जदि करिबा you will get this much. Okay, तापरे एठी गोटे मो बदे प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व करिछि आगु. So a proton is moving in a circular orbit of radius 14 centimeter in a uniform magnetic field. So perpendicular to the velocity of the proton, माने magnetic field is perpendicular to V. तमे हमें जानि गले V cross B टा इठी हे जीवो कोन, V हे जीवो sin 90 is equal to 1 maximum हे जीवो. So find the linear speed of the proton. So it is asking about the velocity. Okay, so how to find out this one? कौन, centripetal, is proton is moving in a circular orbit, so which माने centripetal force हम पकेबा mv square. आमे जदि formula, so suppose you don't know the formula, you don't remember the formula, so simply just put it. So इतना तो मालूम है कि सर्कुलर ऑर्बिट में जब कोई घूमेगा तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, सो F is equal to mv square by air. So यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है. So what is the formula for the magnetic field? QVB. Okay, so it is VB कौन होएला, कैंसिल हो गेला. So mv divided by r is equal to qb. So it is asking about velocity, so v is equal to qbr divided by m. Okay, so since the proton is moving, so what is the charge of the proton? 1.6 into 10 to the power minus 19.
What is the Tesla given? Magnetic field 0.35 Tesla given in the question. Okay. So what is the radius given? 14 given. So 14 into what? 10 to the power minus 2. And 14 -2. divided by 100. Hele meter re convert kariyo. So divided by what is the mass of one proton? 1.67 1.67 10 to the minus. 27 kg. Okay. So minus 27 एठी उपरକୁ पळेबो. So 10 to the power minus 19 minus 2 that is equal to 10 to the power minus 21. एठी कोन रहला उपरକୁ जेतले पळेबो सेटा 10 to the power 27 एठी उपरକୁ गला. So केमती संगे संगे कैलकुलेट करंती देखो हैला. So minus 21 27 माने 27 minus 21 केते हेला 10 to the power 6 हैला. 6. So आमे 10 to the power 6 टाको आगो काढी दवा. तापरे ए जो बाकी क्वांटिटी रहिला so आमे एठी divide की multiply जा करिया था करिवो. So 1.6 into 0.35 divided by 1.67 हैला. तो सेमती तमे पाइबो पाखापाखी. So 4.9 एटा पाइबो 4.9 into 10 to the power 6 that is meter per second. Okay. So if an electron moves in a direction perpendicular to the same magnetic field माने 0.35 Tesla with this same linear speed, that means v is given here. V is given, that is 4.9 into 10 to the power 6 meter per second, and also b is given, that is 0.35 Tesla. Okay, so what is the radius of the circular orbit? It is asking. So what is the radius? From this formula we can get v MD by into QB. m divided by qb. So Vm divided by Qb. But here it is mass of the electron padibo, that is mass of the electron, and here charge of the electron. Same charge of the electron the same, but mass of the electron is pakebo 9.1 into 10 to the power minus kete kono 31 kg. 31. Minus 31 kg. So that you will put. So this answer you will get around that is equal to 7.8 into 10 to the power minus 5 something like that. 10 to the power minus 5 meter, that is the radius. Okay, in meter सब बड़े SI unit रे देखियो हमर क्वेश्चन रे कोन देछि से अनुसार देखियो हैला. So sometimes actually in entrance examination how the question comes, they actually don't say you to calculate this exact value putting the charge of the electron. से माने q form रे देथिबे किंबा plus e form रे देथिबे. E माने electronic charge, that is again same into 10 to the minus 19 coulomb. से माने केमति देथिबे. So suppose this v is equal to qbr by m हैला. So b into r by m टाकू से माने कोन करथिबे माने वैल्यू टा बाहर करथिबे. So एटा को एम्प्टी फॉर्म रे लिखिथिबे. So suppose e into 4.9 into 10 to the power 7 e. 4.9 into 10 to the power 7 e एम्प्टी फॉर्म रे थिबो. So e रो वैल्यू हमें एटी पकेवा दरकार नै. हमकु एति की वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट. Or similarly in this formula, so suppose something like that, suppose देखिबो एठी बाहर थिबो एठी q टा तळे रहिला. So that is e. That means suppose x divided by e. X is the value that you can get by calculating this formula, x divided by e. So एमती चारटा ऑप्शन थिबो. So ए x टा को हमर फाइंड आउट करियर अछि. So सेही तार वैल्यू टा तमे वैल्यू पुट करि पार. एटा सब कंफ्यूजन करिया पे दिया जाय हला. तापरे एटा करिचे आगुरु छाडो. हां एठी उठे देखो प्रॉब्लम देखो. So a particle of mass m that is 10 gram and charge 80 microcoulomb moves through a कौन हला तार बंद करो. So a particle of mass m of 10 gram and 80 microcoulomb moves through a uniform magnetic field in a region where the free fall acceleration is this much. Okay, so the velocity of the particle is a constant velocity, that is 20 I cap kilometer per second,
So 20 I cap kilometer per second देची, and which is perpendicular to the magnetic field. माने V is perpendicular to magnetic field हमें जान ले. So what is then the magnetic field? हमको पचाचे magnetic field टा केते हला. तो हमें टी केंद्र कौन करिवा हमें टी देखिवा. जदि फ्री फॉल एक्सेलरेशन होची डाउनवर्ड रे से देची, so definitely जदि ग्रेविटेशनल फोर्स टा डाउनवर्ड तो हमें इटी गोटे अज्यूम कर परिया द मैग्नेटिक फील्ड इज अप माने मैग्नेटिक फोर्स इज अपवर्ड in order to balance the in order to cancel the force of gravity. Okay, काहे कि the velocity of the particle is in a constant बोले हमको देची हला. constant velocity माने acceleration is 0, so definitely तो सही हिसाब रे हमें इठी गोटे अज्यूम कर परिया. Okay, in order to balance the force. अच्छा, velocity रो direction कौन देची I cap माने let us consider this is x axis. I cap देची. Okay, 20 I cap 20 kilometer per second I cap is the velocity. So force टा एटा कौन हमें लिखि परिबा j cap लिखि दी परिबा सिंपली काई ना तळ डायरेक्शन टा कौन हला माइनस j cap जोटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो पॉजिटिव डायरेक्शन टा हमें कौन लिखि परिबा j cap सिंपली हमें लिखि दी परिबा. ओके, सो फोर्स व्हिच इज इन j cap is equal to q. Okay, q into v cross v, that v is 20 I cap cross b. ओके, एबे मते कुह मते गोटे ये कुह. सो एटा जदी दीटा याक बैलेंसिंग फोर्स हमें प्रथमे तार गोटे मैग्नीट्यूड बाहर करिया. कार मैग्नेटिक फील्ड रो एबे मैग्नीट्यूड हम बाहर करिया. केमति बाहर करिया? सो डायरेक्शन कथा हम एबे कहूनी. सो लेट अस एटा होची डायरेक्शन. सो आई विल से दिस वन. सो हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल? So in this figure we don't have sufficient data. So how to find out? Mass kete देइची 10 ग्राम देइची. particle रो mass kete देइची 10 ग्राम. Charge is also given 80 microcoulomb. So can you put this one? So that is equal to mass into acceleration. We can put it. Okay, so mass into acceleration माने minus 9.8 into what is the acceleration? Minus g. Minus g. Okay, so into 10 mass टा कौन 10 ग्राम. So that is equal to what? 98. किंतु एटी माने minus 98 कौन हैला एटा एक्चुअली ग्राम रे अछि. So we have to convert it to kg. Okay, so एतिकी हे गेला न्यूटन. That is the value of force. So एतिकी न्यूटन j cap is equal to, so minus 10 to the power minus 2. हाँ minus 2 is equal to minus 2 is हमें खाली मैग्नीट्यूड प्रथमे बाहर करे. मु अबे डायरेक्शन कथा कहूनी हैला. So that is equal to 80 microcoulomb. q का चार्ज कितना है 80 into 10 to the power minus 6 coulomb. माइक्रोकूलम माने 10 to the power minus 6 पकेगा. So that is equal to 20 I cap cross b. Okay, so 20 I cap, but 20 इधर क्या दिया है किलोमीटर पर सेकंड दिया है. So 20 के बदले हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे 20 into 1000 मीटर पर सेकंड. 20 into 1000 मीटर पर सेकंड हमको एटी पकेगा पड़िबो. So this into this. Okay, so definitely ये जो क्रॉस सिंबल यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे हमको कंसीडर अभी छोड़ देना है. बस थोड़ी देर के लिए बस छोड़ दो. So that is equal to b is equal to minus 98 into 10 to the power minus 2 divided तो सेटा minus 3 होबो ना कोटारे minus 3 हो 10 to the minus 2 बट kg रे गले. अच्छा minus 3 8 yes sir. this one yes sir. yes sir. gram to kg. Okay,
So 10 to the power minus 3 divided by 80 into 10 to the power minus 6 into it केते 20 I cap ताको हमें मीटर पर सेकंड रे कन्वर्ट करिया सो 20 into 10 to the 20 by power 3 3 3 ओके सो एई जिंसटा को हमें जदी 10 to the power minus 3 अच्छा ना ने कटिवनी एटा ऊपर पळेबो एटा -6 एमती हेग्री हमें फाइनली यू विल गेट दिस वन 0.06 हमें जदी एटा को सॉल्व करिवा 0.06 हमें पाइबा मैग्नेटिक फील्ड रो value of magnetic field. Okay, I mean value पाइले. Now let us consider what is the direction of the magnetic field. So putting these equations, we have found out the magnitude of the magnetic field, but what is the direction of the magnetic field? देखो इटा मनकर x, इटा मनकर y, इटा मनकर z. So this is unit vector notation I cap हमें लिखो, इटा को j cap लिखो, इटा को k cap हमें लिखो. Okay, so सब बेले मन रखिबो I cross j is equal to k, j cross k is equal to I. हैला, so k cross I is equal to j. देखो सब बेले सीक्वेंशियली हमें जीवा I j k. So I cross j you will get k. Cross product रे सब बेले वेक्टर नोटेशंस हमें जतले नो in case of cross products I into j is k into माने सेटा क्रॉस प्रोडक्ट मु इटा भूल into कहूची तो शॉर्ट फॉर्म में देखो हला j k हमको पाइबे हमें पाइबे पॉजिटिव I k into I हला. सो I j k हमें केंती माने राइट हैंड थंब रूल जोटा कहूचे देखो तमे राइट साइड को जाउछो I j j रु k पुनी k रु I पुनी I रु j एमती राइट हैंड थंब रूल माने एटा मैथमेटिकली ताकू एमती रिप्रेजेंट करा जाय. हमें सब बेले आ हाथ बुलेइबानी वेक्टर जेतेबेले डायरेक्शन कथा पचरिबो सब बेले माने प्रत्येक प्रॉब्लम रे हमें तो हाथ को एमती करिकी v क्रॉस v करिकी थंब को ऊपर जाउची पुनी पॉजिटिव की नेगेटिव एते कथा देखि होनी. सो इन दैट केस वी हैव टू कंसीडर दिस टाइप ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, सो किंतु एठी जदी j क्रॉस i हैला ताले हमें कोन पाइबा माइनस k कैप minus k minus k k. cap. whenever the sequence will be opposite or sequence will change, so definitely in that case we have to put the resultant that is equal to minus, गोटे minus sign हमें put करिया. So similarly ए केस रे हमर कोन हेची हमें j cap पाइची हला हमें j cap that is the resultant j cap बोली हमें ऑलरेडी पाइचे फोर्स जेटा केते पाइले जोटा ए सॉरी फोर्स ता तो इठी ऑलरेडी देइची. ओके एंड हमें इठी कोन मैग्नेटिक फील्ड b हां मैग्नेटिक फील्ड हमें पाइले. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड हमें पाइले बट हमको से मांगी छी मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन कोन. सो एई जो रिलेशन अनुसार सो I क्रॉस कोन हेले j पाइबा I क्रॉस कोन को वेक्टर हेले हमें j कैप पॉजिटिव पाइबा k क्रॉस I हेले हमें j कैप पाउछ बट एठी कोन सीक्वेंस Minus ता k अछि cap. minus k सो Minus माइनस k k cap. कैप जदी थिबो हमें से सीक्वेंस देखो चेंज हे गेला. सो k क्रॉस I हेले हमें j कैप पाउछ किंतु एठी कोन अछि I क्रॉस तो एठी हमको माइनस k कैप ओके. सो दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन कोन जो हमें वैल्यू पाइले 0.06 टेस्ला. सो 0.06 माइनस k कैप बोली किबा माइनस 0.06 k कैप हमें एमती लिखि परिबा यूनिट वेक्टर नोटेशन. सो माने माइन्यूटली हमको सब बेले डायरेक्शन कथा जतले पचार देइची क्वेश्चन रे ता माने सेठी हमको टिके केयरफुली हैंडल करियो पड़िबो हैला. खाली मैग्नीट्यूड कथा पचारची सेतर किछि लेन देन नै प्लस माइनस इनटू डिवाइडेड कर दियो जोटा जहा करिया था बाहर जीवन से. बट जतले डायरेक्शन कथा पचारची हमको जदी ऑप्शंस रे हमको खाली मैग्नीट्यूड देई थांदा 0.06 0.08
टेस्ला सो एमती देइथांदा आमे एठी सिंपली पुट कर दवा किंतु एठी गोटे के पुरे देथिबो माइनस के कैप भी देथिबो सर के कैप भी देथिबो 0.06 के कैप भी देथिबो सेठी कंफ्यूजन आसीबो हला सेति पे सबोडे सीक्वेंस मन रखिबा तापरे नेक्स्ट पॉइंट देखिबा an alpha particle travels with a velocity v of magnitude etiki through a uniform magnetic field of etiki okay and tar charge de dela alpha particle tar mass de dela the angle between v and v is 52 degree jo v cross b re am पकेबा v b sin 52 बोली पकेबा sin 52 एटी 90 degree नहीं हैला so what is the magnitude of force acting on the particle due to field and what is the acceleration of the particle due to magnetic force and does the speed of the particle increase decrease or remaining same so से बहुत कथा पचारला ओके आमे सिंपली हमको कौन डाटा देछि हमको q देछि q is equal to 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb हमको v देछि 550 meter per second हमको b देछि so that is equal to 0.045 tesla 0.045 tesla okay and the mass of the this particle given 6.6 into 10 to the power minus 27 kg and theta is 52 degree so sin 52 degree I'll write here sin 52 degree will be 0.78 approximately 0.78 ହେଲା so यहाँ पे सर क्वेश्चन ने sin 52 वैल्यू ता दे दियो नहीं नहीं सुनो यही क्वेश्चन ने sin 52 एठी मु कैलकुलेटर रे बाहर करी लिखि देली बट जनरली जो क्वेश्चन सब आता है जो एग्जाम में से जनरली sin 30 दिया होगा या sin 60 ये सब मतलब जिनका वैल्यू सब जनरली मालूम रहता है नहीं तो कोई टेबल फेबल तुम्हारा क्वेश्चन पेपर के पहले कोई टेबल ऐसे दिया होगा जहाँ पे कि कुछ वैल्यूज लिखा होगा सो वहां से यू कैन फाइंड ओके सो हियर आई हैव गिवन दिस वन सो एठी कोन करबा हम पचाची व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स सो सिंपली हमें क्यूबी भी हां बंद करो तमरो कोन से मशीन चलची बोले q v भी sin 52 so that is equal to q का वैल्यू देखो 3.2 into 10 to the power minus 19 into 550 v cross 0.045 b into sin 52 is suppose 0.78 okay so that you will get around 61.77 61.77 into 10 to the power minus 19 okay force मिल गया so what is the acceleration of the particle due to magnetic force is equal to mass into acceleration you can just put here so force already given mane we have find out that is 61.77 into 10 to the power minus 19 is equal to mass already given mass 6.6 into 10 to the power minus 27 6.6 into 10 to the power minus 27 into acceleration so it has the 61.77 divided by 6.6 into 10 to the power minus 27 करबा okay so that will get that is equal to acceleration so minus 19 minus 27 से डाई जो 8 10 to the power 8 फॉर्म में रखिबा so the 8 को जदि हम करबा that will be equal to something that means 9 point something is also 9.36 into 10 to the power 8 meter per second hala that is equal to acceleration meter per second square सेतमे तार यूनिट हम लिखबा hala एठी तापरे पचाची does the speed of the particle increase decrease or remain same के कहइबो
श्वेता जी बोलिए, does the speed of the particle increase or decrease? प्राणायाम कुह तुम स्पीड इंक्रीज हम an alpha particle is traveling in a uniform magnetic field एठी किछि इलेक्ट्रिक फील्ड रो कांसेप्ट अछि नाही whenever a particle is moving in a uniform magnetic field does the speed increase or remain same बारंबार कहिछि डायरेक्शन चेंज होबो किंतु वेलोसिटी चेंज होबो नाही जेते बेले इलेक्ट्रिक फील्ड आसी जीवो आ भितरे माने क्रॉस्ड फील्ड जोटा हम पढिले हॉल इफेक्ट किबा ई जो लॉरेंज फोर्स ए सब जो जिंस पढिले एठी स्पीड रो कांसेप्ट आसी जीवो काइना एठी इलेक्ट्रिक फील्ड रोल प्ले करिवो वेलोसिटी इंक्रीज करिवारे एंड मैग्नेटिक फील्ड तारो डायरेक्शन को केमती को पट डायरेक्शन ने नबा कथा चेंज करिया कथा सेटा को सी एडजस्ट करिवो हला जो कहली साइक्लोट्रॉन केमती बुलुची हां तो सेटा होची मैग्नेटिक फील्ड काम बट इलेक्ट्रिक फील्ड कोन करिवो से जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जदि हम दबा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओके सो एटा होची हमें रिमेनिंग सेम लिखिबा हमें सब बेले मु कोन कहली जे इलेक्ट्रिक ए जो मैग्नेटिक फील्ड बेले नो वर्क इज डन ऑन द पार्टिकल done on the charge particle कहिछि previous class रे सब बेले ए जो बेसिक गुडा मन रखो चार्ज पार्टिकल बट इलेक्ट्रिक फील्ड रे कोन वर्क डन हमें बाहर करछे ना वर्क डन हमें बाहर करछे हला तापरे एठी देखिबा गोटे क्वेश्चन proton moves through a uniform magnetic field given by this one so in the unit vector notation that is equal to b is equal to 10 I cap minus 20 j cap plus 30 k cap milli tesla into 10 to the power minus 3 tesla okay and velocity at time t1 the proton has a velocity this one given kilometer per second एठी देछि हमको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करियो पड़ियो so v is equal to vx I cap plus vy j cap plus 2 into 10 to the power 3 meter per second माने 2000 meter per second k cap हैला and the magnetic force given is this at that instant what are vx and vy okay so what are vx and vy हमको मांगी it a proton moves through a uniform magnetic field magnetic force देछि velocity देछि v देछि so what are the vx and vy ए जो vx and vy हमको फाइंड आउट करियो देछि केमती कोन करिया force is equal to q b cross b हमको एठी किछि एंगल देई नै किछि देई नै केमती कैलकुलेट करिवा क्रॉस प्रोडक्ट पढैला बेले वेक्टर रो वीडियो जति देखि ना जाय कि देखो अवश्य मु एटा सेतरे बोधे मल्टीप्लिकेशन देई नै पर्यंत आ गोटे पार्ट करि कि देखिबा दबा केतेले सो जो माने क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पढी ना जाय कि विद्यासागर नले रिकॉर्डिंग से जाय कि देखिबो नले मु गोटे नेक्स्ट वीडियो गोटे देखिबा वेक्टर ऊपर कर दबा क्रॉस प्रोडक्ट डॉट पढै दैछि आगु पढै दैछि सो क्रॉस प्रोडक्ट माने कोन सपोज दीटा वेक्टर अछि a और b वेक्टर अछि त ता भितरे जतबे a क्रॉस b हमें करबा केमति करबा सो सपोज a वेक्टर इज इक्वल टू ax I cap plus by j cap plus cy k cap
CZ K. Similarly, B is equal to suppose BX I cap plus BY J cap plus BZ K cap. एमती अच्छी यूनिट वेक्टर नोटेशन आम केमती कैलकुलेट करू. सो A क्रॉस B को एमती कैलकुलेट करा जाए डिटरमिनेंट ऑफ I cap J cap K cap AX AY AZ BX BY BZ. Here AX AY AZ CJ माने BY या जो भी हाँ इटा AY होगा AZ. Okay, so AX AY AZ by BX BY BZ is सब जाए. These are called coefficients. Okay, and this I cap J cap K cap एवढा सब वेक्टर माने यूनिट वेक्टर हैला. तो हमको आर डिटरमिनेंट बाहर करियो पड़े. So how to find out this determinant? Determinant माने कौन? डिटरमिनेंट एमती कैलकुलेट करा जाए. देखो जदि के जानि न मैथमेटिक्स नाही हैला एटा गोटे बेसिक जिंस एटा कैलकुलेट कर एटा 10th रे भी पिला माने पढंती. सो ए जो एमती गोटे दीटा गारा पके लिखली. सो दैट विल बी इक्वल टू आई कैप माने आई कैप नबो एई लाइनटा और एई लाइनटा छाड़ दबो केवल एति की रखिबो आर डिटरमिनेंट आई कैप इनटू ए वाई ए जेड बी वाई बीजे माइनस जे कैप प्रथमे माइनस हो जेतरा सेकंड जे कैप माने जे कैप रा कॉलम और जे कैप रा रो छाड़ दबो कोन रहि गेला ax by az bx हला. सो ax az bx bj तापरे प्लस हला k कैप डिटरमिनेंट ऑफ k कैप रो कॉलम में छाड़ दबा. सो ax ay bx by ax ay bx by. ओके, सो तापरे केमती लिखा जाए ताकू डिटरमिनेंट माने कोन दिस इनटू सॉरी अरे सो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस. सो सिमिलरली एटी माइनस अछि प्रथम रु. सो केयरफुली एटी ऑलरेडी माइनस अछि ए दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस. सो ax by minus bx ay क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो ए फार्मूला अनुसार हमको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करियो पड़े. सो हियर वी हैव गॉट ऑल द वैल्यूज. हमको बस vx एंड vy कैलकुलेट करिया अछि. सो हाउ टू कैलकुलेट? ये ऑलरेडी 10 टू द पावर -3 है. सो 10 into 10 to the power -3 इसको कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में डिटरमिनेंट फॉर्म में. देखो आई कैप जे कैप के कैप 10 into 10 to the power -3 माने कौन 10 divided by 1000 ये कितना हो जाएगा 0.01 0.01 हैला. 20 into 20 divided by 1000 कौन है जीवो हैला 30 divided by अच्छा यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस सिंबल है. यहाँ पे माइनस सिंबल ऑलरेडी एक है. सो 30 divided by 1000 कौन होगा 0.03 0.03 हमें ऑलरेडी एसआई यूनिट रे नहीं गले हमको कंफ्यूजन होबनी. अच्छा एटी वेलोसिटी वेक्टर कौन देछि q v क्रॉस b हमें बाहर करछ. हमें v क्रॉस b वी आर कैलकुलेटिंग. सो v यहाँ पे क्या क्या है vx कंपोनेंट देखो vx कंपोनेंट vy कंपोनेंट and 2 kilometer per second that we have already converted, that is 2000 हला k cap meter per second हला. एबे r डिटरमिनेंट सहित व्हाट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई q रो वैल्यू केते ए प्रोटॉन इज मूविंग. सो q 1.6 into 10 to the power -9. 10 to the power -9. So
सो प्रथमे आमे एई पूरा वेक्टर रो डिटरमिनेंट बाहर करबा डिटरमिनेंट बाहर कर सला परे we can multiply the factor the scalar mane coefficients with this part, that is 1.6 into 10 to the minus 19. That is equal to what? That is equal to force ro again gote I cap component achi 4 into 10 to the power minus 17 I cap component hai plus 2 into 10 to the power minus 17 j cap component है. तो यहाँ पे जो I cap j cap निकलेगा, सो यहाँ का I cap LHS का I cap should be equated to the RHS I cap. So in order to find out Vx, so LHS J cap should be equated to RHS J cap. It is K cap नहीं. So whatever जो भी आएगा, so what you will get generally एक मतलब मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ. You have to calculate it again. Okay, again you try to calculate the determinant so that you will be thorough. वो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कैसे माइनस पॉजिटिव माइनस माइनस सिंबल को हम कैसे माइन्यूटली देखेंगे कैलकुलेशन करते समय, वो सब थोड़ा देखना होगा. सो दैट ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे मैं कॉमन फैक्टर लेके लिख रहा हूँ. आई कैप 0.03 vy प्लस 40 प्लस minus 0.03 Vx plus 20 J cap है minus or you can write plus minus 0.02 Vx minus 0.01 Vy K cap. So यहाँ का I cap उसके सेटा साथ माइनस हो कोटा माइनस 0.03 vx plus 20 टा सेटा माइनस जे के पर जेडा अछि इटा कोटा कहउछो इटा सर जे कैप टर हां जे कैप रे कोन होबो सेपटा माइनस माइनस हो हां माइनस होबो 0.03 vx plus 20 हला आ इटा हिजबो सेमती तमर माइनस 0.02 vx इटा हबो 0.2 भूल लिखिछि इटा जस्ट माइनस करो इटा तमे तम हिसाब रे जोटा डिटरमिनेंट जेमती बाहर करा जाय मु जोटा कहली सेही अनुसार बाहर करो. मु एटा को ताको टिके एक्सचेंज करिके लिखिछि हला. सो एनीवे सो मु गोटा कॉमन फैक्टर नै कि एटा को सॉल्व कर देती माने मु जोटा करूची प्रॉब्लम रे रफली कर दोची हला. सो ताको टिके भलो की फेयरली तमे ताको भलो की करिवो हला. तो एटा तुमको एट लास्ट तुमको मिलिवो दैट विल बी इक्वल टू Vy will be equal to 7000 meter per second. इट जेमती v जो k कैप ता थिला 2000 सेमती vy तुमको मिलिवो 7000 एंड vx सेमती मिलिवो जेटा कैलकुलेट करनी ताको लिखिवो 105 डिवाइडेड बाय 0.03 माइनस सिंबल रे आसीबो. सो दैट जहां भी बाहरिवो दैट विल बी योर vx हला. सेटा कैलकुलेट करिवो डिटरमिनेंट जस्ट ए डिटरमिनेंट बाहर करो पूरा जेंती हमरे हमें नुआ नुआ सिखिले नुआ नुआ कला बेलिया करो. हमें मु कोन लिखिछि छाडी दियो. सो तमे निजे बाहर करो आ भलो की माइनस पॉजिटिव सिंबल दबो. एठी गोटे ऑलरेडी गोटे माइनस अछि माइन्यूटली देखियो एंड एठी जेतले आई कैप दिस इनटू दिस माइनस जे कैप दिस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो हला. तापर an electric field of 1.5 kilovolt per meter and a perpendicular magnetic field act on a moving electron to produce no net force. So what is the electron speed? Similarly, force is equal to what? Q qvb E plus V cross B. एटी लॉरेंज फोर्स पड़िबो एटी लॉरेंज फोर्स पड़िबो इलेक्ट्रिक फील्ड देछि परा एंड ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कथा तब v = e by v करबा है. सो V is equal to E by V.
So that will be equal to 1.5 into 10 to the power 3 divided by 0.4 Tesla. तो कराई କରାହେଇଛି ନା କରାଇଥିଲା ବେଟା ଏଇ ଟାଇପ ର ହେଲା। Similarly, an ion source is producing lithium ions माने positively charged particle ହେଲା, which have a charge plus E. Plus E माने कौन रे 1.6 into 10 into to 10 the to the power minus minus 9 एका कथा ହେଲା। से खाली स्टाइल रे सब यार छाडू लिखि थांदी किए प्लस क्यू लिखिथिबो किए प्लस ई लिखिथिबो ହେଲା, सब कंफ्यूजन करिया पे किंबा 30E 30E माने कोन 30 into 10 to the 13 10 1.6 to minus 30 19 हां 30 into charge of 1 electron 1.6 into 1.6 10 to the minus 19 तो एमती सब विभिन्न प्रकार फॉर्म रे लिखा है। So and mass of the this lithium ions positively charged ions is this one 9.99 into 10 to the minus 27 kg. So the ions are accelerated by potential difference of 10 kilovolt and pass horizontally into a region in which there is a uniform vertical magnetic field माने सी एठी ऑलरेडी तुमको दे दिला है माने वेलोसिटी एवं मैग्नेटिक फील्ड भीतर जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर हैला यूनिफॉर्म वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पास हॉरिजॉन्टली बट एटी यूनिफॉर्म वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड B is equal to 1.2 टेस्ला। So calculate the strength of the smallest electric field to be set up over the region that will allow the lithium ion to pass through undeflected माने मु ए जो लॉरेंज फोर्स ए सब जो कहतिली एटी कोन होची लास्ट रे देखो जेमती अनडिफ्लेक्टेड पास हबो माने मु कहतिल ना गोटे एम्ति जगह रे एडजस्ट करिवे से माने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जेमति कि सीधा स्ट्रेट लाइन रे जीवो आ कोनसी बेंडिंग होबोनी केबा डिफ्लेक्शन हो। ओके सो एम्ति हे कोन हुए गोटे स्लिट थाए एटा एप्लीकेशन होची मास स्पेक्ट्रोमीटर ताको कोनती जेमति हमें साइक्लोट्रॉन देखिले हला मास स्पेक्ट्रोमीटर m by e देखो m by q रेशियो को कैलकुलेट करिया पई ए इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाय तार प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ता होची गोटे मैग्नेटिक फील्ड देबे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड देबे गोटे चार्ज पार्टिकल को कोन करबे ता भितरे छाडीबे सी लास्ट रे कोन हबो जेतले स्लिट पटे जीवो भितरु पसिजिवो से चार्ज पार्टिकल आ भितरे गोटे दूसरा मैग्नेटिक फील्ड थिबो तार स्ट्रेंथ अलगा थिबो। ओके सो सी तापर कोन हबो गोटे सर्कुलर पाथ रे मूव करिवो लास्ट रे जेकी गोटे फोटोग्राफिक प्लेट पडिवो। सो विभिन्न सैंपल तार सब बहुत एप्लीकेशन अछि सेउडा एबे तमे बुझिवा दरकार नै। सो मास स्पेक्ट्रोमीटर इशू रे पई काम रे आसी क्रॉस्ड फील्ड हां तो तार फार्मूला होची या m by q is equal to r v0 by v एटा ठीक लेखो ए दिटा फार्मूला लिखिता हम कहबी हैला। सर टिके देखन से हां 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 सर एटा एप्लीकेशन टा कार मास स्पेक्ट्रोमीटर हां मास स्पेक्ट्रोमीटर से इंस्ट्रूमेंट रो ना जो इंस्ट्रूमेंट रे ई प्रिंसिपल टा यूज हुए ना। ओके सो देखिबा प्रॉब्लम टा देखिबा आगो q e plus q v cross b हमें देखिबा दैट इज इक्वल टू एटा नय सर 11 हां सो एठी के देइची सो माने एई जगह रे कोन होची एक्चुअली फोर्स टा जते बेले जीरो हे जीवो सेते बेले हमें कहि परिबा q e is equal to q v b हमें जेमति को जेटा कहतिली हला। सो एई केस रे हमें केमति को लिखिबा व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी half mv square and what is the potential energy किबा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें जोटा कहउछे q into v सेटा कोन हे जिवो माने एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें जेतले इलेक्ट्रिक फील्ड केस रे जेतले कैलकुलेट करथले
सेटा हम कोन करते इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने गोटे इलेक्ट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन को मूव करिवारे केते सेटा जोटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी सो E into V so half mv square is equal to ev so V is what ev এটা this V is volt potential a V টা কোন that is velocity okay Velocity. okay so velocity is equal to E to ev cross multiply divided by m का root over okay हला and here we know E is equal to VB Q cancel or E by B is equal to V already we have got okay so a case रे हमें केमती लिखिबा एट sorry so ये जो V है so we have to calculate it हमको पता है what is the minimum electric field calculate करने के लिए दिया है what is the strength of the smallest electric field so that it will pass undeflected so we need to calculate this one so we have to calculate B into V के बदले हमको ये फॉर्मूला डालना पड़ेगा so that is equal to 2E into capital V that is ये जो potential difference है देखो 10 kilovolt divided by M M टा कौन 9.99 into 10 to the power minus 27 kg e के e रो वैल्यू पकाओ v रो वैल्यू पकेबो b रो मध्ये वैल्यू देछि 1.2 टेस्ला okay so finally you will get the answer that is equal to 6.8 into 10 to the power 5 what is the unit of electric field रो unit कोन Newton by Coulomb. हैं एठी न्यूटन बाय कूलम पकेबा आउ कोन इलेक्ट्रिक फील्ड रो यूनिट कोन हो यूनिट volt divided by meter Meter. volt per meter okay so volt per meter खाली न्यूटन पर कूलम माने कोन खाली सेहीटा को ही धरथिबा आ किछ पकेबानी तीन चार चारटा यूनिट अछि तमे जेमति ताको बोलेबा के पकेबा हला आमे फोर्स कथा जतरे होचे चार्ज कथा जतरे होचे सेते बेले आमे पकेबा ई माने कोन सेटा जो फार्मूलाटा फोर्स इज इक्वल टू A into Q. E into Q ହେଲା सेटा अलग कथा है गेला किंतु एटा तो एठी हमें मीटर एबे कोन डिस्टेंस विषय रे पचाची वोल्टेज देइची सो वी कैन फाइंड आउट ओके एटा पाइबो तमे 6.8 into 10 to the power 5 volt per meter हाँ देखा एटा कर क्वेश्चन नंबर 13 है so a strip of copper 1.150 micrometer thick tar width is placed in a uniform magnetic field of this much tesla with magnetic field perpendicular to the strip mane magnetic field is perpendicular to the velocity of the particle okay so a current is this much ampere is then set up through the strip such that the whole potential difference appears with across the width of the strip से क्वेश्चन एते बड़ बड़ क्वेश्चन देखि डरिबार नै हैला सो कैलकुलेट v द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन ऑल वोल्टेज र फार्मूला कोन डेल्टा vh कोन कहितली को के देखि को सुकन्या ऑल वोल्टेज नेक्स्ट क्लास पूरा प्रीवियस क्लास रे कहितली ऑल वोल्टेज र फार्मूला कोन
अरे किसी लिखा होनी all voltage ଏଇଟା କହିଥିଲି କାଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରିଂ କଣ୍ଡକ୍ଟରରେ ଆମେ ପ୍ଲେସ୍ କରିଦବା ସେ କରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରିଂ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ଚାର୍जेस ମାନେ जो फोर्स पड़े मनकर करंट आम देचे डायरेक्शन रे तो सपोज नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द क्रॉस प्रोडक्ट रूल ओके सो फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन तो ए चार्ज माने जतले ऊपर को पळेबे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तळ पोर्शन रे पॉजिटिव चार्ज अक्युमुलेशन हो ऊपर पोर्शन रे नेगेटिव चार्ज अक्युमुलेशन हो so there is a potential difference created electric potential differences is created due to the accumulation of opposite charges at opposite ends okay so say jo potential difference ko calculate karibara formula and this phenomena is called as Hall effect तार formula हमें बाहर करथिले बाहर करिकि हमें एई से तीनटा चारटा इक्वेशन हमें पाइथिले एटा उट इक्वेशन voltage is equal to electric field into distance simply we know it suppose we cannot remember this formula so let us consider हमें ये formula को हमें मने रखनी simply हमें जानिचे voltage is equal to electric field into distance जानिचे हैला so electric field टा कौन अरे एबे जो बाहर कलो v is equal to what e by v so e is equal to vv तो v पकाओ into d but एटी v टा कोन ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना एटी इलेक्ट्रिक फील्ड रो कांसेप्ट आसीला हैला so delta vh all voltage the potential difference what is this created is equal to v माने d vv okay so it suppose we just write vv vvd it drift velocity बोली सब बड़े मन रखथिबो ओके बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी टा कोन करंट जेतेले देछि सेतेले कोन n q a v d n टा कोन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम q टा चार्ज a is the area of cross section तो एई केस रे v जगह रे हमें जदी v d जगह रे I by n q a पके दवा n q a पके दवा तो एई फार्मूला हमें जस्ट we have got it this much formula right as the thickness into distance that will get the area so area jagre it pokendile this is again the one another formula delta vh is equal to ib by mqt delta vh is equal to ib by mqt सबले घोसी माने मन करो if you cannot remember you cannot by heart these formulas just try to माने derive the formula from the basics whenever a particle is moving in a let us consider circular path सबको बेले मन रखिथिबो एठी गोटे centripetal force रो formula आगे पके दो and that force is equal to what suppose एठी electricity रो concept देछि कि magnetism रो concept देछि तो electricity का concept दिया है तो q डालो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेटिज्म का concept दिया है तो q v डालो तो वहां से बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकल जाएगा अगर याद नहीं रहता है तो इसे ऐसे ही करो ना ठीक है सो दिस इज द फॉर्मूला डेल्टा vh इज इक्वल टू ib by nqt आईटा कितने 23 एम्पियर 23. what is the magnetic field 0.65 tesla divided by n given number of charge carriers per unit volume 8.47 into 10 to the power 28 into q what is q NE. Ne electrons it dechi so definitely the charge carriers here are electrons so 1.6 into 10 to the power minus 19
coulomb na, into what is the thickness given 150 micrometer 150 into 10 to the power minus 6 है। तो ये जो भी ऊपर लेना है ले जाओ उसको -19 -6 that will give you -25 80 रहेगा 28 सो ये हो जाएगा 10 to the power 3 नीचे रहा है तो ऊपर चला जाएगा so that will be 10 to the power -3 ऊपर आ गया ओके so that will be equal to 7.4 into 10 to the power -6 ये जो डिवाइड करिवो so that will get 7.4 into 10 to the power -6 volt that is the hall voltage potential difference बोला लिखिलो एटा ना कोन हला कि जदि कि जिनि समस्त कर हला एटा यस सर श्वेता यस सर गुड क्या हो मतलब हो रहा है ना समझ में आ रहा यस है सर यस ओके सर ये देखो B is given 4 into 10 to the power -3 Tesla millitesla है the particle is either a proton or an electron you must decide which one question में दिया है so this particle is a proton or neutron that you have to decide so it experiences a magnetic force given 3.2 into 10 to the power -15 Newton. So what are the particle speed and the radius of the circle and the time period of the motion? Okay. So whether it is an electron or whether it is an proton, we don't know. Let us consider. Okay, but what we know, the charge of the particle for proton or electron, Q mod the number, so 1.6 into 10 to the power -19. So by putting this value, this force, we can calculate it. Force यहाँ पे क्या दिया है 3.2 into 10 to the power -15. 15 is equal to 1.6 into 10 to the power -19 V cross B. Okay, B is already given. अच्छा, whenever the particle is moving in a circular path, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है टेंजेंट ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है सो यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट आएगा दैट इज वेलोसिटी वेक्टर हमने क्या बोला है हमेशा फोर्स का डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज सिंस इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ माने ऑलवेज द force is directed towards the center of the path. So force का direction यहाँ पे है. So what is the direction of the magnetic field given? Dot माने कौन? Out of the pen, out of the paper. माने cross माने into the paper. अंदर जा रहा है हमारा जो कॉपी हम लोग रखे हैं टेबल के ऊपर उसके मतलब अंदर जा रहा है और ये डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट ऐसे अगर गोल घुमाया होगा कोई फिगर में तो दैट इज आउट ऑफ द पेपर ओके सो इट इज समवेयर इन दिस डायरेक्शन आउट ऑफ द पेपर दैट इज आल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर माने 3 डायमेंशनल कांसेप्ट इमेजिन करो ठीक है तो यहाँ पे ऐसे दिया है
So definitely the angle is 90 degree. So V जगह तार जहाँ पके कथा पको 90 degree पकाओ हला V पकाओ. So that you will get the answer is 0.5 into 10 to the power 7 meter per second. That is the particle speed. Okay. What is the sign of the particle? What is the sign of the particle? Whether it is a electron or proton. अगर मैं पूछूंगा कैसे देखेंगे ये फिगर को कंसीडर करके हाउ टू फाइंड आउट from the right hand thumb rule or whatever the vector analysis whatever. So how to find out? Always remember this figure. For your convenience always remember this figure. हम लोग कैसे डिराइव किए थे. यहाँ पे क्रॉस सिंबल है. क्रॉस सिंबल मतलब क्या? इनटू द पेन ऑफ द पेपर. ओके. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द पेन ऑफ द पेपर. एक पॉजिटिव चार्ज हम लोग कंसीडर किए थे घूम रहा है जो कि वेलोसिटी उसका एंटी क्लॉकवाइज. सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज ही हमेशा कंसीडर करो. एंटी क्लॉकवाइज अगर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल घूम रहा है उसका लिनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है जहां पे जिस पॉइंट पे भी देखेंगे टेंजेंट होगा. फोर्स हमेशा सर्कुलर पाथ में वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ मतलब फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर तरफ रहेगा. ओके. एंड क्रॉस माने मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज इनटू द पेन ऑफ द पेपर. सो ऑलवेज रिमेंबर एंटी क्लॉकवाइज. ओके. क्रॉस माने into the pen of the paper. Anti-clockwise what? Magnetic field. Okay. Force is always in towards center. So in this case, Q is positive. Okay. अगर यहाँ पे क्रॉस के बदले डॉट दिया है हम लोगों को, but always force is towards the center and the circular path is anti-clockwise, it is moving, but this is given out of the pen of the paper. ता माने Q रो साइन कौन है थी वो? Negative. Just opposite. Say anti-clockwise. Say towards the center always the force. Okay, but here it is given out of the pen of the paper magnetic field. ता माने Q का साइन होगा नेगेटिव. जस्ट अपोजिट. पर यहाँ पे मैं दो चीज चेंज करूंगा. यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज के बदले क्लॉकवाइज करूंगा और यहाँ पे इनटू द पेन ऑफ द पेपर के बदले आउट ऑफ द पेन ऑफ द पेपर करेंगे. तो व्हाट शुड बी द सिंबल? बट फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. फोर्स का डायरेक्शन कभी नहीं चेंज होगा. सेंट्रीपिटल फोर्स है. ओके. सो व्हाट शुड बी द सिंबल? अगेन पॉजिटिव. सो हमेशा एक चीज को अगर हम लोग याद रखेंगे तो बाकी सारा चीज हमको मिल जाएगा. ठीक है. सो बी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा सर्कुलर मोशन में. सपोज माने उसका पाथ सपोज सर्कुलर मोशन है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. And this into the pen of the paper is the direction of magnetic field and force is always towards the center, so that is why Q is positive. Okay. इसको अगर हम लोग याद रखेंगे तो बाकी जो सिंबल यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन में क्या दिया है? सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज माने वेलोसिटी टा हमें एमती नहीं करिया. यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करछि एमती तो इस जगह पे क्या हो जाएगा? ऐसे टेंजेंट जाएगा. ओके. टेंजेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा. सो एंटी क्लॉकवाइज एंड मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है? आउट ऑफ द पेपर. ऑफ द पेपर. फोर्स always towards center.
So Q should be negative. तभी जाके राइट हैंड थंब रूल सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तुम लोग राइट हैंड थंब रूल भी डाल के देखो अपने उंगली में, जो भी सब भी जो इधर उधर घुमा के देखो, दैट विल गेट द सेम। ओके, बट ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज को हम लोग रेफरेंस चार्ज लेंगे, नेगेटिव अगर है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सर। तापरे Thank you, sir. हाँ, wait a minute. So यहाँ पे particle speed already we have calculated. What is the radius of the circle it is giving? The question again, radius of the circle mv by qb, but here what is the mass? इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कैलकुलेट करिवार थिला, हमको देखिवार थिला जे पार्टिकल टा इलेक्ट्रॉन ना प्रोटॉन एटी मागिची। So particle is either proton or an electron. You have to decide. The question is asking. So we have seen it is a electron. So electron mane eti mass रे kahar mass पड़ियो, electron no mass पड़ियो, that is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Okay, and then what is the time period of the motion magici? So time period is equal to qb divided by 2 pi m.